So welcome back students. This is our second part of the series that we are continuing with, and it is NCERT Indian Polity, and this is the second video of it, and these videos are for the foundation batch Adarshila, which is conducted by CFA. So I'll also request you to watch the first video first, because you see this is a series, so there will be continuation of things, there will be linkages, there will be interconnectedness. So if you have not watched the first video, you cannot connect the chapters, and you cannot well, you might have a little problem of understanding it as a whole. So if you watch it the first video, I might give you some references on the first video, that first video may I have said this, I might say it. So if you have not seen the first video, you might not be able to connect it. Okay. So the second chapter of Indian polity is the rights in Indian constitution. So NCERT begins with some examples of why do we need rights and how it is important in the society. ठीक है, actual relevance of rights are defined here by the examples of NCERT. So in the earlier chapter we have studied, when I was talking about the constitution, when I was telling the need of the constitution, what is the constitution and how its existence impact us. ठीक है, so I was also telling you about the functions of the constitution, in which when I said that constitution also limits the power of the state. ठीक है, it limits the power of the state, which means that it ensures a democratic system in which every people can enjoy their certain rights. Okay, so when I say that constitution limits the power of the state to ensure a democratic system so that every citizen can enjoy certain rights, it means that rights are very much important for an individual to experience liberty. Okay, so what does right mean? Before coming on to the example as mentioned in the NCERT, I would like to come on the rights. Okay, so what do you mean by rights? Okay, when I want to define the term right, what will be the first thing that will come into my mind? It will be the legitimate claims that I make in the society. Okay, legitimate claims, what do you mean by legitimate? Legitimate means valid claims. ठीक है, valid मतलब वैध in Hindi. ठीक है, so these are valid claims that I make. What is the source? People. ठीक है, people, society or law. So what do I mean by this is that कि अगर मुझे किसी टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है, इट माइट बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू कन्वेंशनल माइंड्स, बट मैं उस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि आई हैव राइट टू फ्रीडम, which is Article 19, Subclause 1, Subclause A, where I have right of freedom of speech and expression. तो I can speak about anything. ठीक है, I can claim कि नहीं मेरे पास ये अधिकार है, that I can speak about it. So that claim that I made here is a legitimate claim which is given by the constitution to me. ठीक है, which is the fundamental law of the land, which guarantees me that I get my right. I can make a legitimate claim. Okay, so the next question comes here is that since I know my rights, why do I need rights? ठीक है, तो rights तो हैं, but वो ज़रूरत क्या है इनकी? तो what are the needs of right? See, when you live in a society and you don't have right, तो आप अपने आप को develop कैसे करेंगे? ठीक है, there are some potentials that need to be achieved as a person, as an individual. So to achieve the potential, there could be two ways. It could be moral. There could be moral potential that has to be achieved, and the material potential. ठीक है, so moral potential is that अगर सरकार ही मुझे बताती रहेगी कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, तो मेरा potential कैसे अचीव हो रहा है? ठीक है, how will I am going to develop myself? तो एक इंसान की moral डेवलपमेंट हो, इसलिए rights are important firstly. Secondly, material, like it's my discretion that I should
आई शुड चूज कि मुझे क्या प्रोफेशन चूज करना है, मुझे क्या पढ़ाई करनी है, मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है. तो दिस इज माई सोल discretion that I should make for my development so that my potential can be achieved. तो rights are important. ठीक है, अगर मेरे पास rights ही नहीं होंगे तो none of them can be achieved. Okay. Now if we compare India with other countries, like if we compare India with other democratic countries like Britain for example, if I take Britain, ठीक है, because what is UPSC is doing, UPSC is comparing a lot of countries, ठीक है, and also when you should read certain things you should compare it with other countries and other things so that there is more clarity in your concept. So when I take Britain, so Britain, first of all Britain has no written constitution, ठीक है, नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कुछ भी एक्सप्लिसिट नहीं है, ठीक है, एक्सप्लिसिट नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, हाउ डू वी नो कि राइट्स क्या है हमारे पास. तो ब्रिटेन के केस में व्हाट डज द स्टेट डू, दे मेक ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है, दे मेक इट ऑर्डिनरी लॉज और उसी को वो राइट घोषित कर देते हैं, ठीक है. इन इंडिया एज वी नो देयर इज नथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो व्हाट डज फंडामेंटल मीन, like in India we have fundamental rights. ब्रिटेन के केस में there is not no concept of ऐसे fundamental right, and in US के केस में भी there is no concept of fundamental rights. I'll get on to US बाद में, first I'll tell about the Britain, ठीक है. तो fundamental मतलब fundamental itself is very basic, ठीक है, fundamental मतलब very basic और essential, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि आप ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ इनवायलेबिलिटी आ जाती है जब फंडामेंटल राइट्स की बात होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. मतलब दे कैन नॉट बी टेकन अवे इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस बाय द स्टेट. ये ऐसा कुछ ब्रिटेन में हमें देखने को नहीं मिलता है. ब्रिटेन में देयर आर ऑर्डिनरी लॉज विच कुड बी termed as right by the state, ठीक है. इट्स द पूरा डिस्क्रिशन जो है ब्रिटेन में इट्स ऑन पार्लियामेंट. वी सी दैट ब्रिटेन में जो है देयर इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है. तो इन नाउ व्हेन वी सी यूएस, ठीक है, यूएस में अगर हम देखें तो यूएस में there is no fundamental right concept but we can see bill of rights, ठीक है, we can see bill of rights. और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी स्टेट होता है कि जैसे कि बिल ऑफ राइट्स के अलावा भी और भी लॉज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. सो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इट्स नॉट कि बिल ऑफ राइट्स में जो राइट्स हैं वो ऑर्डिनरी लॉ से अलग है, मतलब ऑर्डिनरी लॉज को भी सेम स्टेटस पे रखा जाएगा जैसे बिल ऑफ राइट्स है. सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट दैट वी सी फॉर फंडामेंटल राइट्स इन अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके. जैसे इंडिया में वी सी फंडामेंटल राइट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉज, ठीक है. दैट वील डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस इन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी लॉज. But as we compare it with other countries, we have clearly seen that in US we have Bill of Rights which are totally different from fundamental rights. मतलब they have ordinary rights which also have the same status of Bill of Rights of US. And in Britain there is nothing explicit written in the constitution. मतलब there is no written constitution. So we cannot say कि क्या हमारे पास है क्या नहीं है in Britain. Also, there is one thing that I also want to make you clear that in Britain, in case of Britain, ठीक है, judiciary, suppose parliament, suppose okay. So one thing I want to make you clear with is that कि in Britain
ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है इज ऑमनी प्रेजेंट, ठीक है, इट्स ऑमनीपोटेंट। ब्रिटेन की पार्लियामेंट इज ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट मीन्स मतलब इट हैज सुप्रीमेसी, इट हैज अ लॉट ऑफ सुप्रीमेसी, ठीक है। तो ब्रिटेन में वी सी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है। सो द क्वेश्चन माइट कम लाइक फॉर इंस्टेंस, ब्रिटेन में क्या होता है, देखो ब्रिटेन में मैं आपको ओके, सो अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू इज दैट कि ब्रिटेन में जो जुडिशरी है, ठीक है, जो जुडिशरी है वो आपकी तब एक्टिव होती है जब एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना होता है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसा किया विच इन्फ्रिंजेस द राइट ऑफ पीपल देयर, तो जुडिशरी एक्टिव हो जाएगी, जुडिशरी बोलेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, यू हैव टू टेक बैक दैट एक्शन, ठीक है, तब जुडिशरी बोल सकती है। बट इन केस द लेजिस्लेचर से समथिंग और लेजिस्लेचर मेक लॉज विच माइट इन्फ्रिंज द राइट्स, ठीक है, कुछ भी ऐसा लॉज बनाती है जो कि एक बेसिक इंडिविजुअल राइट को इन्फ्रिंज करता है, देन जुडिशरी कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है। तो ब्रिटेन में जुडिशरी तभी एक्टिव होती है जब एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करना होता है, जुडिशरी कैन नॉट कंट्रोल लेजिस्लेचर इन ब्रिटेन। सो वी सी दैट ब्रिटेन हैज अ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट इज omnipotent in Britain, ठीक है। what do we say that parliament is omnipotent in case of Britain, ठीक है। when we see the case of US, ठीक है, तो यूएस में क्या है कि यूएस में जुडिशरी जो है इट कैन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जुडिशरी तो वी सी दैट यूएस में जुडिशरी का सुप्रीमेसी है, वी सी द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो when it was coming onto the framing of constitution, what we have seen the two examples of Britain and US। तो हमने रियलाइज किया है कि एक जगह पार्लियामेंट्री की सुप्रीमेसी है, एक जगह जुडिशरी की सुप्रीमेसी है, ठीक है। तो what we have done, we have chosen a mean path, we have chosen a middle path, which is हमने क्या किया है, इंडिया में किसकी सुप्रीमेसी है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, ठीक है। तो we have not chosen US और ब्रिटेन, we have chosen constitution over everything, ठीक है। So now the question comes कि when we see Britain and US having different supremacy, it is because देयर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, किसी जगह पे कोई भी व्यवस्था बनी हुई है, इफ सम प्लेस हैज अ सिस्टम, तो वो सिस्टम उसकी कुछ हिस्ट्री की वजह से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी सी दैट द नेशनल मूवमेंट और इन फ्रीडम स्ट्रगल वी हैव सीन द लीडर्स हैव सीन दैट व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट, ठीक है, राइट्स नहीं थे हमारे पास, ब्रिटिशर्स ने हमारे राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। सो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ rights, the leaders of India have realized the importance of right, इसलिए fundamental right is separately given in the constitution with special provisions protected by them, and also the constitution ensures it protects the fundamental rights in the constitution। so किसी भी जगह की जो भी हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से उसकी पॉलिटिकल व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल if we see ब्रिटेन, ठीक है, तो ब्रिटेन में हुआ था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है, इफ यू ऑल नो ब्रिटेन में दे हैव एक्सपीरियंस्ड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में क्या था कि जो किंग था, वहाँ के जो किंग थे उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर थी। सो देयर वाज अ ट्रांसफर, उनको एब्सोल्यूट पावर एग्जीक्यूटिव के पास थी, सो दे हैव सीन द पावर इन द हैंड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो पावर वहाँ से ट्रांसफर करके उनको पीपल को पावर देनी थी। पीपल, by the people I mean the representative of people, which means legislature, ठीक है। तो ब्रिटेन की कहानी ये थी कि वहाँ पर
दे हैव सीन एब्सोल्यूट पावर ऑन द किंग्स हैंड, तो उनको पावर ट्रांसफर करनी थी, पावर देनी थी पीपल को, तो पावर पीपल को देनी थी, पीपल को मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल विच इज लेजिस्लेचर विच इज द पार्लियामेंट. सो हेंस वी सी दैट टुडेज ब्रिटेन हैज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. ठीक है. इन केस ऑफ यूएस वी सी, यूएस में क्या था, इफ यू रिमेंबर दैट यूएस में थी कॉलोनीज. ठीक है. यूएस में वी हैड कॉलोनीज. तो जो कॉलोनीज थी, यूएस ने इनिशियली ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया था. ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन यूएस ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, बट उससे क्या हुआ कि देयर वर सम पार्लियामेंट्रीज हु वर थोड़े से टिल्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज. तो उनका कुछ फेवरिज्म था वेस्टर्न कंट्रीज में, जो कि विच रिजल्टेड इनटू द एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी. तो एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि चलो ठीक है, पार्लियामेंट में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट को इलेक्शंस लड़ने होते हैं तो फेवरिज्म आ जाता है, तो फिर इलेक्शंस किसको नहीं लड़ने, जुडिशरी को नहीं लड़ने. ठीक है. तो जुडिशरी इज द ऑर्गन जो कि थोड़ा सा न्यूट्रल रह सकता है इन सब चीज़ों में. सो दे हैव गिवन द अल्टीमेट पावर, द सुप्रीम पावर टू द जुडिशरी इटसेल्फ. ठीक है. तो वी सी द हिस्ट्री ऑफ दीज टू कंट्रीज एंड देन वी कैन फिगर आउट कि इनकी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे क्यों है. ठीक है. कमिंग बैक टू इंडिया, वी सी दैट इन इंडिया देयर वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ठीक है. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, इसको रिव्यू करने के लिए दो चीज़ें आई. फर्स्ट वाज अ साइमन कमीशन. ठीक है. फर्स्ट वाज साइमन कमीशन एंड अदर वाज पार्लियामेंट्री कमिटीज. ठीक है. तो पार्लियामेंट्री कमिटीज और साइमन कमीशन ने ये रिव्यू दिया, ये एडवाइस दी कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक ब्रिटेन आ जाना चाहिए. ठीक है. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक ब्रिटेन आ जाना चाहिए. तो जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. तो मोतीलाल नेहरू इन 1928 ही सेड कि नहीं, वी कैन नॉट पुट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हियर, वी कैन नॉट पुट जुडिशरी सुप्रीमेसी हियर, और हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, जो हमें राइट्स देता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी रखनी चाहिए यहाँ पर. ठीक है. तो राइट्स की जो डिबेट थी, इट केम फ्रॉम हियर. ठीक है. तो इन्होंने सजेस्ट किया दैट देयर शुड बी राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन which were very deprived in the national movement which was experienced by national leaders. Okay, now we can come to the example that was given by NCERT. So NCERT starts with two examples. First is an example in 1982 where we see there was a construction going on Asian Games. ठीक है. So contractors appointed some workers for the construction of the games and they were paid less than they were promised. ठीक है. वो मिनिमम वेज से कम उनको वेज अमाउंट मिला. सो दे मूव टू द कोर्ट एंड दे सेड कि हमारा वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट्स का, विच इज they were experiencing forced labor and begar, right to exploitation, right against exploitation का वायलेशन हुआ है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है. सो दे मूव्ड इनटू द कोर्ट एंड दे फाइल्ड अ पिटिशन रिगार्डिंग इट. तो पिटिशन फाइल करने से क्या हुआ, दे गॉट देयर राइटफुल वेजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया उनको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. व्हाट इफ अगर ये हमारा राइट ही नहीं होता, ठीक है, द नीड ऑफ द राइट, वाई डू वी नीड द राइट, अगर हमारे पास ये राइट ही नहीं होता कि हम कोर्ट में जा सकते हैं अपने एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ पिटिशन फाइल करने में, तो हमें राइटफुल वेज नहीं मिलता, हम एक्सप्लॉइट होते रहते. सो दिस इज द नीड of the constitution that is told by an example here. Second example, we see that there was this person Machul Lalung, a resident of Assam. So he was in judicial custody for 54 years. Why? Because firstly he was accused of some grievous injuries. ठीक है. तो court pronounced him as mentally unfit for the trial. तो mentally unfit था तो फिर उसको mental hospital भेजा गया for the treatment of his illness. तो जब mental hospital wrote court that
Now he is fit for the trial. You can hear the case. The court was very much careless about it and they didn't pay attention to it, and because of their carelessness he was in judicial custody for 54 years. So his right to life and liberty was violated. Okay? Right to liberty, life and liberty does not mean that a person should be alive. Okay? It has a very broader scope that is defined by Supreme Court that we will study later. But right to life and liberty also means that a person must have right to a fair and speedy trial. It does not mean that the person should barely be alive. It also means that a person should live a life of dignity. Okay, that is a broader scope. We'll read further. So these are the two cases which tells about the relevance, which tells about the importance of the right in our daily lives, why the right is very much important for us. Okay, moving on to the next thing is the Bill of Rights. So Bill of Right is, as I have told you, Bill of Right is an inspiration. We have inspired from the Bill of Rights in US. So what does it mean? It means that a democracy must ensure that the government recognizes the rights of the people. Okay, so there is some list of certain rights which are mentioned, which are known as Bill of Rights. ठीक है, तो Bill of Right क्या prohibit करता है? It also prohibits government from acting against the right of individual. ठीक है, और in case it is violated, उसको remedy, उसको justice मिले. In the case for similar cases that we have seen in India in 1982 वाला जो मैंने आपको instance example दिया था अभी construction worker वाला. So in case there is a violation, you get a remedy for it. The Bill of Rights in US, it states there is a list of certain rights which has to be recognized by the government in a democracy. ठीक है. Now if I'm continuously saying that these rights have to be protected, these rights have to be protected, guaranteed by the constitution. So the question arises, protected by whom? Okay, so by whom our rights are violated? It could be two instances. First one is the private individual, is a person, is an individual that could violate our right. Okay, so the rights could be protected by another person or private organization, and secondly by organs of the government. So these are the organs of the government: legislature, executive and judiciary. In the practice of functioning their rights, in the practice of functioning their duties, they might violate your rights. So these are protection. The constitution protects from these kind of violations. Okay, another person or private organization might violate our rights. So the necessity of government that it interferes and it makes sure that a person who is violated gets a remedy. So these are the instances where the rights have to be protected. Okay, moving on to fundamental rights. As I said, कि fundamental means very essential for an overall development. These are very basic needs and these are very important also. ठीक है, very important that these are separately mentioned in the constitution with special provisions and constitution itself guarantees it. ठीक है, and the name fundamental that I told you before, the fundamental name, they cannot be, fundamental right means they cannot be taken away from you in ordinary circumstances. ठीक है, principle of inviolability comes here, that in normal circumstances they cannot be violated. ठीक है, the fundamental rights are different from ordinary legal right. How they are different from ordinary legal right and how we can say that fundamental rights are special and protected? See, in case of fundamental right and ordinary laws, okay, OL is for ordinary laws and FR is for fundamental rights. So fundamental rights, firstly we see that they are protected by the constitution. Okay, protected by the constitution under article 32. Okay, under article 32 is the writ
jurisdiction. Article 32 that we'll read about it, it is a special writ jurisdiction that a Supreme Court can give you a judgment in case your violation of fundamental right occurs. ठीक है, अगर आपका कोई भी fundamental right violate होता है, by activating Article 32 you can seek the justice, you can seek the remedy from Supreme Court directly. ठीक है, Supreme Court will protect your fundamental rights in case they are violated, and you can activate your Article 32, which is writ jurisdiction, and you can directly approach to the Supreme Court. In case of ordinary laws, they are also protected in the Constitution, but you can activate Article 226, 226, which is the High Court. ठीक है, and then you can seek for your remedy. So you see, this is the writ jurisdiction of High Court. ठीक है, so we can see there is a lot of difference when it comes to the writ jurisdiction of Supreme Court and High Court. The writ jurisdiction of Supreme Court is a very narrow concept that we see. It only works when your fundamental rights are violated. But in the case of High Court, the writ jurisdiction has a broader scope, has a broader perspective. It also protects your rights when any ordinary law is violated. Okay, so you can always move to the High Court when your violation of ordinary laws are there. Secondly, we see that fundamental rights can be curtailed, can be changed, can be repealed, and but for changing fundamental right, constitutional amendment has to be done. Okay, and these can be changed by ordinary law making process. Okay, the ordinary law can be changed by ordinary law making process. The constitutional amendment आता है जब आपको किसी फंडामेंटल राइट को चेंज करना होता है, कर्टेल करना होता है, ऐड सबट्रैक्ट करना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है. ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन चेंज अ फंडामेंटल राइट विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूट्स हैं, तो you can change a fundamental right, but you also have to make sure that the basic structure of the constitution जो हमारा है वो change ना हो. The principles of the constitution जो हमारे हैं, it should not be changed. For example, the one of the basic structure is republic. ठीक है, तो you cannot make any changes in the fundamental right which change the structure of being a republic. आप ऐसे कोई laws नहीं ला सकते हैं जिससे dictatorship या monarchy आ जाए. You have to always make sure that India stays republic. Okay, so these are two differences that you have to always make sure कि एक तो इसके पास writ jurisdiction है which makes it special, and ordinary laws have also a writ jurisdiction which comes under Article 226 under High Court. Okay, moving on to, so we have seen the differences. These are the differences that are written. They are protected by Constitution. Ordinary law protected by ordinary law. Okay, fundamental rights can be changed only by constitutional amendment. No organs of the government can violate fundamental rights. It's very obvious. Ordinary legal rights can be changed by legislature through the ordinary lawmaking process. ठीक है, now judiciary जो है, judiciary has the power to make sure that the rights are not violated, and in case of the violation of the right, remedy is provided. ठीक है, legal remedy is provided by the judiciary in case of the violation of any. Next comes to the fundamental rights protection. As I told you, judiciary protects the fundamental right, and in case of executive and legislature, in case executive and legislature make some laws, implement some laws that violates the basic fundamental rights of the constitution, so they can be declared as null and void by judiciary itself. So judiciary protects the actions done by executive and legislature. If a fundamental right is violated, there is an unreasonable restriction in its name. The court can review the matter. In case there is an unreasonable restrictions that is made by, and what are these restrictions?
जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल हैं या फिर अनरीजनेबल हैं, इट इज ऑल्सो सीन बाय द जुडिशरी। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि आपके पास आपके अधिकार तो हैं, यू हैव योर लेजिटिमेट क्लेम्स, बट आपके पास रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि अगर आपने ये किया तो फिर आपको आपके राइट नहीं मिलेंगे, फिर आपको आपका फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट वायलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि दैट वी सी इन एवरी राइट सो दैट वो एब्सोल्यूट ना हो। इन केस ऑफ यूएस का जो बिल ऑफ राइट है इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर। ठीक है, इट इज एब्सोल्यूट इन नेचर, बट इन केस ऑफ इंडिया वी सी वी हैव क्वालिफाइड राइट्स। ठीक है, क्वालिफाइड राइट्स क्यों? एक सेकंड, वी हैव क्वालिफाइड राइट्स। क्वालिफाइड मतलब वी हैव रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इन केस ऑफ यूएस देयर इज एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट है, यूएस के पास एब्सोल्यूट राइट है, विच मीन्स दैट अ लेजिस्लेचर कैन मेक एनी लॉ। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल का राइट इन्फ्रिंज होता है तब यूएस में जुडिशरी एक्टिवेट होती है एंड देन इट कैन से कि नहीं नहीं ये आपने गलत किया है। तो वी सी द बिल ऑफ राइट्स आर एब्सोल्यूट इन नेचर। ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू जो कॉन्सेप्ट है वो बिल ऑफ राइट्स में नहीं लगता है, बाकी जो अदर राइट्स हैं अदर देन द बिल ऑफ राइट्स उनमें जुडिशियल रिव्यू लग सकता है, बट बिल ऑफ राइट्स इज एब्सोल्यूट इन नेचर। जब लेजिस्लेचर कोई लॉ बना देती है विच इज इन एब्सोल्यूट इन नेचर, जुडिशरी एक्टिव होती है। ठीक है, और उस लॉ को कैंसिल आउट कर सकती है। तो इन इंडिया वी हैव सीन द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज सीन कि कैसे जुडिशरी एक्टिव हो रही है जब एब्सोल्यूट आ रहा है और किसी इंसान का राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। तो वी हैव सीन फ्रॉम दिस एंड वी हैव टेकन अ लेसन कि ये चीज़ हम अपने में ना ऐसे इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज द फ्रेमर्स वर विजनरी एंड दे सॉ द चैलेंजेस हियर। तो उन्होंने देखा कि अगर हमने एब्सोल्यूट बना दिया है एंड देन जुडिशरी को एक्टिवेट होना पड़ रहा है एंड जुडिशरी देन इज इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट, तो हमने पहले ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं उसमें। व्हेन वी हैव राइट्स वी हैव रिस्ट्रिक्शंस टू, सो दैट जुडिशरी को ऐसे बार बार एक्टिवेट ना करना पड़े। That's the beauty of the Indian Constitution if when you read it. No right is absolute. See, no right is absolute, but there is one exception in the Indian Constitution, which is right against untouchability, Article 17. Here we see it is an absolute right which comes. Okay, this is the only exception that we see in the Indian Constitution, that right against untouchability is an absolute right. Then comes fundamental rights. Okay, the fundamental right is enshrined in part 3 of the Constitution, and it covers Article 12 to Article 35, which I'll be taking in the next class, in the next part. Okay, it is also known as Magna Carta of India. Magna Carta is a charter of rights taken by England. ठीक है, so there was, I told you, it was King John. ठीक है, King John had absolute power और उनसे frustrate होके people pressurized him to sign a document. So it was a first written document which gave them fundamental right. ठीक है, तो fundamental right in India is sometimes known as Magna Carta of India. ठीक है, the concept was taken from Bill of Rights US. ठीक है, no fundamental rights are more elaborated. So you see here that क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स इतने इलेबोरेटेड हैं, इतने एग्जॉस्टिव हैं, ठीक है, इतने तो किसी के नहीं है, मतलब यूएस एंड अदर कंट्रीज इफ यू कंपेयर, वी हैव द मोस्ट इलेबोरेटेड एंड एग्जॉस्टिव फंडामेंटल राइट्स एंड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी लेंदी. बट व्हेन यू सी द फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ यूएस, जो बिल ऑफ राइट है इट इज़ नॉट दैट इलेबोरेटेड. तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि जो भी अदर राइट्स हैं
वो भी सेम स्टेटस उनको मिलेगा एज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उनको भी बिल ऑफ राइट्स की तरह बाकी जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो भी कंसिडर्ड एज सेम एज बिल ऑफ राइट्स। बट इन इंडिया इफ वी सी दैट फंडामेंटल राइट्स हमारे इतने एलैबोरेटेड, इतने एग्जॉस्टिव हैं कि हमें कुछ और को सेम स्टेटस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो हियर वी सी दैट इंडियाज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी मच एलैबोरेटेड एंड कंपेरेटिवली टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन or US, any other countries or US, even though we have taken it from US. Now we come that why they are guaranteed by the Constitution. What is the need of guaranteeing fundamental rights in the Constitution? So first is that they uphold equality of all individuals. Secondly, they protect the dignity of every individual. As I told you that the fundamental right, Article 21 says that we have life, right to life and liberty, which means that being alive is not the only right. To live a life of dignity is the another thing which has to be make sure in our fundamental rights. So dignity of a individual has to be protected. Okay, dignity of a person, individual has to be protected. Okay, for national unity also, so that there is a unity maintained in the constitution, in the society, the constitution has guaranteed the fundamental rights. Fundamental rights also shows the ideal political democracy. ठीक है, कैसी होनी चाहिए, क्या rights होने चाहिए, क्या restrictions होने चाहिए, how every section of the society comes first and how they have distributed everything very beautifully. So एक ideal political democracy दर्शाता है हमारे जो fundamental rights है, तो constitution guarantees it that it is protected so that जो यूनिटी है वो बनी रहे, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट ऑथोरिटेरियन डिस्पोटिक रूल, ठीक है। वी हैव फंडामेंटल राइट विच लिमिट्स द पावर ऑफ द government, which limits the power of the state. It so that there is democratic system and every individual can enjoy their certain right and no authoritarian or despotic rule can come into the being. So it establishes a government of laws then men, ठीक है। So government of law should be there, not of men. Next comes fundamental right. I have told you पहले ही that fundamental rights guarantees the fundamental law of land, so they should be protected. Originally there were 7 fundamental rights and the right to property was repealed. Okay, right, the property was deleted from the fundamental list by 44th Amendment Act 1978. There were originally 7 rights, ठीक है। right to property हट गया है अब and now we have 6, ठीक है। तो we have 6 fundamental rights now, ठीक है। now जो right to property है ये फंडामेंटल राइट से तो हट गया है बट इट इज अ लीगल राइट, आर्टिकल 300A एंड पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। So we still have it in our constitution, but it is not a fundamental right. Features of fundamental right, that it is available to every person and citizens too. There are some distinguished articles. There are some articles which are only for citizen and some articles are only there for citizens and foreigners and for private companies. So there is a table made, so you can see there. I'll show you in the next part. And also these are not absolute right, they are qualified. What does it mean? As I have told you, it is qualified and not absolute. It means that we have restrictions, reasonable restrictions that comes along with the right itself. So when we see the right, we have reasonable restrictions. These restrictions ensures to make a balance between the liberty of an individual and the interest of a society as a whole. So to maintain there is a balance between the two of the things, the individual and the society. So there are reasonable restrictions which are decided by the courts. Secondly, it protects against the arbitrary action of the state, which we have learned. Justiciable, it means they are enforceable. You can move to the court and file petition against them. Fifthly, they are defended and guaranteed by the Supreme Court. Supreme Court is the guardian of our constitution. It provides you remedy, it provides you justice in case there is a violation of the constitution, fundamental right. They are not permanent in case they are
They are not permanent and they are not absolute in nature, which means that they can be curtailed, repealed, added or subtracted. ठीक है, but constitutional uh, they can be repealed and they can be subtracted, they can be added, but their basic structure of the constitution should not be changed. Okay? They can only be amended by a constitutional amendment act, and we also have to always make sure that the basic structure of the constitution should never be. Okay, so I think it's it for the video, the first part. I'll be continuing with the second part where I'll be telling you about all the articles that are related to the fundamental rights, the articles from 12 to 35, which tells you very, gives you a very detailed explanation of fundamental rights. Okay, and I will also tell you that why right to property was added in 1950 when the constitution was there and was repealed in 1951 instantly when the constitution came into force. So why there was a need of putting right to property in the first place when it was repealed. So I will also tell you what are the basic rights and their reasonable restrictions alongside, so that it gets very clear image in your mind that even though we have some rights, but we also have some restrictions where we have to be very careful about. Okay, so I'll see you in the next video, and